Star Citizen will come out this year, and it will have NFTs. PS5 only games like Returnal, Demon's Souls, and Ratchet and Clank will come to PC in 2022. We are going to get a Max Payne remastered trilogy. We actually get to see like Resistance ka like remakes and remasters, and a Resistance 4 being announced. God of War Ragnarok is not going to come out this year. Talker 2 will get delayed again into next year. Half-Life Alyx, it's going to come out on PSVR 2. Hey guys, welcome to another episode of Let's Start to Play. I'm your host Ayush from Game of Fiend, and joining me today is the full cast: Darren Rodriguez, Abhi Jha, Sushir Rahman, and Manas Joy. What's up? And the Avengers have assembled here today for a very special episode. We are going to give our predictions for the rest of the year. Some predictions that we think are definitely going to happen, some predictions that we think might happen, and some predictions that we think should not happen. Or will not happen. Right. So I have my notes right here. Right? अरे don't tell them ये पूरा scripted है. हमारा शो उतना ही अनस्क्रिप्टेड जितना रोडीज and split filler. So Sushir, take it away, man. Okay. You are the originator of this idea, so all yours. I hope our this episode of our show is as well produced as the jacket that Darren is wearing. Moving on to the first category. The first category, it's called Bullseye. And to tell you a small thing about it is that this is a prediction that we, whoever's saying it knows will definitely happen. So don't be a wuss. Have some liquid courage and move beyond making jokes about Star Citizen's release. ठीक है? Star Citizen का release के बारे में ऐसा कुछ सुनना ही नहीं है मेरे को. कुछ और नया सुनाओ. Don't fix what is not broken. तो मेरी prediction तो वही है. Right. तो Bullseye में तुम नहीं बोल सकते. Bullseye क्या? They are not even fixing what is broken. मेरा prediction is not broken. That's so who wants to go first? Manas, do you want to go first? Yeah, I'll go first. Yeah. And I'll start on a positive note. My Bullseye ki Starfield will be a hit. Yes, Manas. Critical and Manifest करना है मुझको अपने सुशीर ने कितने पैसे दिए? सुशीर तो नॉन बिलीवर है, बात ही नहीं करना चाहता इस गेम के बारे में. सुशीर तो सही में यार. Phil Spencer का blank check आया है. ये तो गेम फ्लॉप होगा, मैं सेल पे ले लूंगा और फिर इसको मॉड आ जाएंगे और ये बहुत बढ़िया हो जाएगा. This is the kind of game that read my mind, man. Seriously. I have a feeling ki it's been so many years, and after Fallout 76 a failure also, people want even more ki they want a good Bethesda game na, and I think this will be good enough, and with mods and all it'll get pretty crazy and काफी long tail होगा इसका. Lots of it seems like they're building it with a lot of potential. 1000 planet wala system and all, it's not something I like, but I also did not like Skyrim ka procedural quest generation and all, but it became a massive hit na, people just kept playing it. So They kept also re-releasing it. yeah, I will do people plus had to play. analysis and make it hope it happens. Yeah, Starfield is the biggest game ever. तो we'll Produced. split the points ना जो मिलेंगे that you get fantasy critic के. अरे तो prediction जीत में fantasy critic जीतूंगा, दोनों भाई साथ साथ. क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? Collusion. अलग टीम वर्क है. हाँ. दोनों मिलके हमें बना रहे हैं. Who wants to go next? Who wants to go next? Darren, do you want to go next? I For will your go Bullseye? next. For my Bullseye, Miyazaki will release an Elden Ring DLC this year. Oh. मैंने कह दिया है for all of you out there. पर ये isn't that like वो जो उन्होंने अरे ये cosmetic DLC तो नहीं होगा ना? DLC बोला है मैंने. I think that's like a सही- pretty सही much से a बता. sure. I think they'll release like an expansion जैसे what do you say, Ring City है. Yeah. Not Scholar of First Sin, but Dark Souls 1 में यार वो कौन सा है with Artorias, in which you go into the past वगैरह. Yeah. Like that, they'll have a proper expansion where they will add new content to the game, maybe add a new location, add more bosses, and give you more to play. So yeah, I think एक तो expansion आएगा इनका, इस साल आएगा ऊपर से.
चलो देखते हैं. सही. अभी what do you think? And it for and it me- should before Abhi says, and it should release just before Forbidden West DLC releases. that will be the best thing to happen to it. एक हफ्ता के अंदर दोनों रिलीज कर जाए बस खत्म. That will guarantee his success. एक हफ्ते बाद. Sorry Abhi, बताओ please. No, for me, I would go with the Avatar Frontiers of Pandora. That game Oh, will probably yeah. get delayed. कौन सा गेम? अच्छा delayed. ये तो This year, मतलब इस साल से निकल इस साल जाएगा. से निकल जाएगा. वो तो Oh, आई मुझे थिंक लगता भी नहीं. ये इवन आई एम श्योर. अगले अवतार के साथ आएगा वो. लेकिन अगले हफ्ता तो दिसंबर ही में आ रहा है. है? सही में अगला हफ्ता तो दिसंबर में आ रहा है. हाँ. वन एवटार Fire वाला? एवरी ईयर. अभी तो आई है ये. अभी तो आई है वाटर. अभी देख के आया मैं. ये 2023 का दिसंबर में आने वाला है ना. डैम दोनों कितना पैसा. हाँ दोनों शूट तो हो गए फ्रॉम व्हाट आई हर्ड कि ही शॉट देम बैक टू बैक ना. हाँ, वेव ऑफ वाटर के शूटिंग में ही उसने थर्ड और फोर्थ का कर लिया था. आई एम नॉट श्योर. थर्ड और फोर्थ. आई थिंक. हाँ 4 पिक्चर हो जाएंगे. हाँ, 3 और बना रहा है बेसिकली. ये हाँ, I सही है think. भाई. ये तो पूरा पर वो पता नहीं Last किस- Airbender कर रहा है. लास्ट एयरबेंडर. स्ट्रीमिंग पे कब आ रहा है यार ये मूवी? पता नहीं. डिज्नी पे आएगी ना. आएगी जब तो. प्रॉब्ली आई गेस. पर वो पता नहीं कि इस साल वो रिलीज करेगा कि नहीं नेक्स्ट. सॉरी आई वाज रॉन्ग. ये बोल रहे हैं 2024 बोल रहे हैं. हाँ दिसंबर 2024. ऑलरेडी That will वन be- फेल्ड प्रेडिक्शन ऑलरेडी. ये इसके पॉइंट काटो. सुशील सुशील अभी के माइनस. point हम लोग 0 से शुरू करेंगे. अब सुशील माइनस से शुरू करेंगे. मतलब अभी बोल रहा है कि दोनों एक साथ आएंगे 2024 में ही आएंगे है ना. अभी फ्रंटियर्स ऑफ Yeah. पेंडोरा और Game of Pandora. Yeah. डिले तो हाँ 2024 में आना चाहिए था. Because Okay. मुझे लगता नहीं कि इस साल में. We will update your prediction 2024 अगर नहीं आता. फिर देखते हैं. अभी इसके अभी point तो पे तब तक नहीं मिलेंगे. भाई साहब वो भी है. तो अभी इस साल यूबीसॉफ्ट के गेम तो आएंगे ना. Ubisoft के गेम्स तो आ रहे हैं पर Okay. Avatar का मुझे लग रहा है कि for sure. Who अरे knows? Assassin's Creed तो आ रहा है इस साल. Good Oh. franchise. Good. वो भी 4 Assassin's Creed. कितने अनाउंस किए? 6 नहीं. एक इस साल आ रहा है. कुछ बहुत 10-12 अनाउंस किए होंगे. 10-12 इन वर्क्स. आयुष अपना बता दो. मेरा यार सब जानते हैं यार. मतलब I'm not going to be bullied by Sushir into not changing my prediction. स्टार सिटीजन को खरीदने वालों तुम्हारा और पाप चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर. इस साल भी नहीं आएगा. माय गॉड. $60. तो मतलब तो यू आर सेइंग द स्टार सिटीजन कैंपेन विल नॉट कम आउट दिस ईयर. इज दैट इट? हाँ वही मतलब जो भी है. Squadron 76 क्या है वो? Squadron 42. 42. 42. Mark यार अब तो Hamill. मैं ना I've lost interest. I don't know what is happening with Star Citizen now. पहले तो मैं I just used to follow it out of spite. मतलब just to like tell people हाँ देख लो ये चुतिया. This is what happens. अब तो मैं follow भी नहीं कर रहा हूँ. Like I've lost interest. But it is consistently giving me points on this table. I think जब से हम लोग ये गेम खेल रहे हैं मैं ये prediction कर रहा हूँ. And it hasn't failed me yet. So why not keep going? So guys, question: would you have $100 worth of NFT or $100 worth of a Star Citizenship? Citizenship क्या होता है? Of course. I will take the Star Citizenship. NFT के ऊपर. हाँ एक दिन But तो depends if the NFT is created by Ubisoft. मतलब क्या? I don't know. एक दिन Star Citizen बहुत it will be a big thing. You will see. But that day is not in 2023. देखते हैं. We will see. Okay. So my bullseye, last one. There's a particular game. It will not release this year. And Don't say GTA 6. पर GTA 6 वाला तो इसमें रॉकस्टार वालों को भी कभी कन्फर्म है कि इस साल नहीं आएगा. नहीं मैं अपना थोड़ा इमेज बदलने मांग रहा 2023 में. तो the prediction is that Halo Infinite will not release this year. हैं? Halo Infinite कौन सा release है पहले? अब क्या Halo Infinite Unreal Engine में बन रहा है and they are trying to do some multiplayer shit and whatever not. Halo तो Infinite multiplayer था उस गेम में पहले से. नहीं वो पूरा वेट. गेम में बहुत सारा कुछ था. अब Right. आदमी लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं है तो फिर से रीमेक जो कुछ हो रहा है. Forge mode नहीं था ना वो बनाया ना वो नहीं बना रहे वो लोग. वो Forge डाल दिया. डाल Forge है. दिया. लेकिन हाँ, सुशीर आई थॉट कि द नेक्स्ट हेलो इज बीइंग मेड इन अनरियल. इन्फिनिट को पोर्ट No. कर रहे हैं नहीं Unreal. they are Port कर remaking रहे हैं. Infinite in Unreal. Halo Infinite को अबे पोर्ट कर रहे हैं यार. पूरा इंजन को. और वो इस साल नहीं आने वाला. अगले साल पता चलेगा Waste. कि वो प्लान कैंसिल हो चुका है. ठीक है. This seems like वो प्लान जैसे ऐसा नहीं होता जैसे पार्टी के लिए बोलो कि पार्टी की तैयारी करनी है. ठीक है. हाँ. वाइफ बोलती है पार्टी की तैयारी करनी है. The husband starts
cutting like the grass with a using a scissors. This is what it sounds like. We need to release another game. इस साल नहीं आने वाला. पूरे गेम को बनाएंगे वापस. फिर से वही प्रॉब्लम्स के साथ. ये तो बहुत इजी चीज. सुशील if you said कि हेलो को कुछ नहीं होगा इस साल, I would be like हाँ कुछ नहीं डालेंगे, DLC नहीं डालेंगे, नया सीजन भूल जाएंगे मे बी वो लोग, नया मैप भूल जाएंगे, मे बी बोलेंगे ये सब तो बैक बर्नर में ऑलरेडी चला गया है. You know, the remake is the main priority, right? Porting is the main priority right now, and that is not going. It's not going to happen this year. So ये तो बहुत इजी वाला है. This is easier than Star Citizen not releasing this. Oh, is it? I agree. Could not have guessed it. मतलब मैं सुशील को मैंने I broke the rule taking Star Citizen. Right. एक और Bullseye सुनना है तो सुन लो. Bloodborne PC पे नहीं आएगा. 60 FPS का फिक्स नहीं आएगा कभी. जितना रोना है रो लो. Bloodborne नहीं आने वाला. So you know. मैंने एक बनाया था about Bloodborne कि Bloodborne won't get a patch but it will get a remaster. And मैंने ये लिखा था and I was like नहीं यार कोई और नहीं यार कोई और मजाक उड़ा देगा इसका. हाँ छोड़ो ये हो सकता है. Okay. Now that we're done with the Bullseye के मतलब we know this is going to land. Let's go on to the second category. The second category is called The Heart Wants What the Heart Wants. And like Darren, the heart wants Phantom Liberty, but this is a prediction that you desperately want it to come true. मतलब तुमको जी जान से मतलब पूरी कायनात तुम्हारे साथ हेल्प कर रही है. ये Phantom Liberty का मतलब क्या है? What does like those two words together mean? किसकी liberty है? Why are we still here? Phantom? Means the democracy that we are living in right now. I don't want to say anything else. So we are already living in 2077. That's what you're trying to say. Yes. मतलब बाकी दुनिया 2022 में जी रही है. India is in 2027. So this is a prediction that you desperately wanted to come true, and when you really want something, the universe will conspire to make it true, and this is what is happening. So I kind of have an idea regarding what Abhi might say, but let's again move through the same route. We will say Martha is dead too. Yes. This time without Morse code. अंदर ही अंदर मैं कोबरा एकदम तो there's a fire in me. अभी is like रात को सोता है Morse code सिम आ जाए बस. इतने सारे सिम गेम आते हैं Morse code क्यों नहीं आता? You're like a telegraph. You're a telegraph reporter who gets Morse code messages and you don't translate them for incoming visitors. अरे वही मेरा interesting idea secret for a day job game. हाँ तो telegraph simulator. Indie game के लिए like you tell a story through just telegram and you are like already कोई Russian developer चुरा के बना ला होगा. You are basically transcribing the end of the world happening. कि nuke launch हो रहे हैं ये वो. चुराना मत. चुरा के कौन खेल रहा है यार ये गेम 001 अभी खेलेगा. मैं आऊंगा वहां और वहां की रिव्यू कर देना मेरे को. भाई ये मैं कैफे सिमुलेटर खेलना शुरू किया था मैं पागल हो गया. मैं कहा बरिस्टा सिमुलेटर दिस इज नॉट मैजिक. मैंने कहा खोलना ही नहीं मुझको कैफे. मतलब दैट गेम शुड इंस्पायर यू टू ओपन अ कॉफी शॉप. इट इज डूइंग द रिवर्स. मैंने कहा ये टेलीग्राफ सिमुलेटर क्यों खेलेगा? आई यूज्ड लाइक मैं नौकरी कर लूंगा बिजनेस से मेरा मन उठ गया. भाई वो बरिस्टा सिमुलेटर पता क्या एक तो उसके खुद के घर में ओनली देयर इज वन बेड दैट इज ऑल. एक बेड है बस ठीक है. वो बेड में से निकलता है सुबह 8 बजे रात के 2 बजे तक कॉफी का काम करता हूं मैं. 2 बजे सोने जाता हूं रात को. लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. मेरे को ये तो लाइफ चलेगी नहीं भाई. कॉफी शॉप तो नहीं खोल पाएंगे अपन. सॉरी. ठीक है. Let's get back to what the heart wants what the heart wants, and let's start with Abhi. Abhi, go ahead. What do you want to say in this part? So I've been a big fan of Telltale games, and Walking Dead तो वापस नहीं आना है, but there's another game that I really love जिसके बारे में आया नहीं after like for so long. तो Wolf Among Us first part आया, उसके बाद they announced Wolf Among Us 2. They have not talked about it, but they mentioned that they are going to say something really important about Wolf Among Us 2. So for me, no, I feel like Wolf Among Us 2 इस साल release होगा, because I really want that game to. I'm pretty much sure कि वो लोग अच्छे से build up करेंगे Wolf Among Us 2. So that's what my heart wants. All good. Ravenclaw से Hufflepuff पे आते हैं. Darren, what do you think?
What's your I didn't know कि Wolf Among Us was actually based on a bunch of like books, like a visual, Fable. yeah, on the fables, and I was like, when I found it, I was like, oh, you should read it. Like the first why don't people read it to find out what happens? first edition. No, because the story, like the game is based before the book starts. The first book. basically. तो first book से पहले की कहानी है सारी. It's like already set in. कहानियों से I will come to my kahani, Go which ahead. is so this might come true very soon. So my heart wants a new Pokemon game to be announced this year that will not be made by Game Freak. And this is not like a side game. I want a proper game that is not made by Game Freak to be announced. So why do you not want it to be made by Game Freak, Taran? Have you seen any news about Pokemon Scarlet and Violet? Have you seen the game? Like they are so Okay, let me understaffed. rephrase that question. What do you want in a new Pokemon game? What would make you buy it? Apart from like you will buy any Pokemon game that comes out, how as bad as it is. But what will make it like a good? I think if they were to just थोड़ा सा effort डाले in What do you want? थोड़ा सा effort. थोड़ा सा effort थोड़ा- डाल दे कि उनका visual presentation में थोड़ा सा effort डाल दे ना कि सोच के like I don't even want like next gen graphics या Zelda जैसे graphics या Xenoblade जैसे नहीं Oh, Zelda graphics is the वो. I want a coherent good art style, ठीक है, a good visual style for the game, and I Hi-Fi want देखा सपने मत दिखा, heart wants but this is what the brain wants now. अभी नहीं चाहिए. And also I want the game to have like actual like some interesting changes to it, जैसे Arceus था which changed the way you played the game, right? उस type का something where it's not the same as the Pokemon so far but a little different visually, also a little bit different, and so that it's more interesting and fresh, right? Most Pokemon games I've not played Scarlet and Violet because I wanted to hopefully 5 years from now it might run better, तब I might play it. But I want Pokemon games to have a better end game. When they released Pokemon, क्या है वो Silver जो भी था, they added the full old game with it, like as a post game thing. तो ये तो नहीं कह रहा कि पूरा दूसरा game डाल दो as a post game, but have some interesting post game, right? Once I beat the league, कुछ करने को ही नहीं होता. I get bored कि यार I want to play more, मैं चाहता हूँ और चीजें करने को, but तुम दे नहीं रहे मेरे को कुछ. तो बस प्लीज थोड़ा सा यार तुम They सबसे want to you to highest spend grossing $60 more on another game, ना? मतलब ऐसे. But like there is like the perfect example of a Nintendo fan. He's not. मतलब कह रहे हैं थोड़ा सा अगले गेम प्लीज थोड़ा सा एफर्ट डाल दो. मतलब पता खरीदूंगा तो मैं हूँ ही, पर अगर आप प्लीज थोड़ा सा एफर्ट और डाल दो, that would be great. again. और इसके इस स्केल के दूसरी ऑपोजिट साइड है 343 एंड दे लाइक हम लोग पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, कोई नहीं चाहिए. इनका बीच का कुछ समथिंग इन मिडिल गाइस. just so you know, not Game Freak, but Pokemon is the biggest media franchise in the world, like the highest grossing. सबसे बड़ा है above Disney सब कुछ, ठीक है. उनसे मैं ये भीख मांग रहा हूँ कि थोड़ा सा अपना game उसका सही में उसका गेम देख के it's like the biggest franchise, but you look at its game, it look like some knockoff on Steam. इतना सच्ची? टट्टी ग्राफिक्स है देखने. पोकेमॉन हटा दो, क्या है ये? बक्सनैक्स से भी गंदे. Please get the graphics to the level of Zelda. Like that's the. वो भी नहीं अच्छे कर लो चाहिए Zelda, यार. जितने अच्छे कर दो graphics. A coherent art style like Minecraft, please. वो भी चलेगा. एटलीस्ट स्टाइल तो कुछ है. तो सिमिलर दिखना चाहिए. My God. अरे सब रिपीटिंग है, but it looks good. सपने देखो तो तुम्हारे जैसे. Seriously. अभी आएगा एक और सपना आएगा बाद में. Okay. Let's go. Manas. Yeah, मान आधा कर दो. I'll go next. I'll stay on the positive streak. आयुष ने तो दिल दुखाई दिया, लेकिन I want Star Citizen to release in 2023. Oh. इस साल. सही Let's है, see. मान सही. Enough think time हो आजादी- गया है. They've been putting out some and they've been putting out content, and last year मैंने देखा, especially second half of last year, कि they've also been working with a lot of YouTubers to push more video content as well. तो उससे मुझे लग रहा है like there's like a marketing push Ponzi happening. scheme कहते हैं उसको.
तो मे बी मतलब कुछ महीनों में we might get to see some kind of release announcement. ये क्या पता. space snake oil salesman Manas Joy. Todd Howard. But also एक perspective से I can totally imagine it doesn't make any sense to release Star Citizen. Then तो the money flow kind of feels like खत्म हो गया. जब आते तक ही बन रहा है रहेगा। तब तक पैसे आते जा रहे हैं वैसा लग रहा है. ओ मानस स्टार सिटीजन बोल रहे हैं, मैं दिमाग में स्टारफील्ड सोच रहा हूं, मैंने कहा हाँ इस साल तो आएगा. क्यों ऐसे क्यों बोल रही है? दूसरा स्कैम का बात चल रहा है यहाँ पे. But yeah, that's mine. Okay. Ayush, do you want to go next? Oh man, I laughed so much. और आएंगे jokes. I am Oh my back. God, It will not be dry like the yeah. last episode. नहीं, बहुत मतलब I फन था think, लास्ट एपिसोड. I want मतलब I picked this game in my fantasy critic league, but इसके hopes काफी कम है. So ideally I would like Dragon Age Dreadwolf to release this year. But barring that, I think a more realistic wish is that there is some gameplay that is released. कि कैसा लग रहा है game और how the gameplay there. ठीक है. कुछ 1 घंटे का तो मतलब 15 मिनट का कुछ हो कुछ जाए. leak हुआ ना? concept art. कुछ लीक हुआ ना ड्रैगन एज का या किसका? हाँ ड्रैगन एज का ही था. वो ऐसे हाँ। दिखा रहे थे. हाँ ऐसे ही कॉन्सेप्ट फुटेज में ऐसे मतलब छुरी लेके ऐसे से हिला रहे ऐसे पागल लोग की तरह है ना. लाइक ठीक है मेरे को देखना नहीं है. और हिला रहे क्या है ये? वो तो ये तो एक्चुअल स्टारफील्ड फुटेज लग रहा है. नहीं देखना अभी मुझे. I नहीं, like मतलब how I gone want from- something from Dreadwolf to get announced this year. मतलब I fingers crossed gameplay. That is where I'm placing my bet at. Hopefully it comes out. और मतलब गेम रिलीज होगा तो बहुत ही अच्छा. मतलब फिर तो बहुत ही बढ़िया. किसी भी उसमें तो मैं अंडर 70 में रिलीज होगा तो कोई बात नहीं. I am good with that. बट रिलीज होना चाहिए. ठीक है. मेरा बाकी है. And this हाँ, is go for it. it's going to be a little complicated. And Oh. this is going to be a two-parter. Okay. इसलिए बोला था. पहला वाला थोड़ा नेगेटिव. जो इस साल का हाईएस्ट रेटेड गेम होगा वो ना सोनी से होगा, ना माइक्रोसॉफ्ट से होगा, ना निंटेंडो से होगा. वो मियाजाकी से होगा, एल्डन रिंग डीएलसी. नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ. ये 3 बड़े स्टॉलवर्ड से नहीं होगा हाईएस्ट रेटेड. Star Citizen. Mobile game. क्यों मैं बोल रहा हूँ. And why what is going to happen. ये साल लास्ट ईयर की तरह नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट कोई गेम रिलीज नहीं करेगा. This is going to be a So big year. you said You never Microsoft, know. ना? नहीं माइक्रोसॉफ्ट कुछ नहीं है इसमें, पर बता रहा हूँ क्यों. क्या what is the point. This is going to be a big year for Microsoft because this year will Rockstar actually game. have game releases. कि कुछ गेम माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करेगा फर्स्ट पार्टी. हाँ. The अच्छे cherry games. on top. That is the cherry on top. Games. I'm telling you. नहीं वो मतलब होता है ना कि अनाउंसमेंट ट्रेलर आएगा उसमें रिलीज डेट्स होगा. This is a game. Yeah. ये रियल है. This, yeah. फिर होता And triple A, फिर होता double A, फिर होता A. this is a game. फिर And होता है जीपी गेम पास. the actual prediction is that Microsoft का best critic rated game जो होगा will be higher than Sony's best critic rated game this year. अच्छा, तो you're saying like whatever Microsoft produces this year, तो ये Star One Citizen game, एक game, already. whatever नहीं, कचड़े भी आएंगे. नहीं, Game उनका Pass है जो पीछे. high rated game होगा, कचड़े भी वो आएंगे. Spider-Man 2 will critic rating ऐसा. You think it will beat Spider-Man 2? हाँ, I am not naming any names. I am just अरे, saying I'm just saying, I'm Microsoft का asking you best a question. critic rated game. What will be- would Microsoft produce that could beat Spider-Man 2? ये मैं नहीं बोल question I'm सकता. asking you. ये मैं नहीं बोल सकता. फिल ने But क्या बोला in तेरे को your- फोन करके? In your Microsoft expertise, जो तुम्हारी domain knowledge है, subject matter expert हो तुम. Games that Microsoft is producing. क्या लगता है? Grounded ये- से बाहर आएगा क्या? ये होगा? मेरे मेंटल ब्रेन में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो गया ऑलरेडी. मैं इसका आंसर नहीं दे सकता. बट या दैट्स माय प्रेडिक्शन इज माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट क्रिटिक रेटेड गेम विल बी हायर. दिस इज व्हाट तो द हार्ट मैंने वर्क्स. पहले जब Flight Simulator हे में लेकिन train रेसिंग गेम वाला चीटिंग नहीं करना है. फोर्जा मोटरस्पोर्ट जीत कोई स्टोरी ग्राफिक्स फोर्जा मोटरस्पोर्ट्स 99.5. कुछ स्टोरी थोड़ा ग्राफिक थोड़ा हो वो जाए, I'll सब. be very happy. I am with you, उसमें Sushil. ध्यान से देखो सारे सुशील ने लिखे हुए रिव्यू अलग-अलग वेबसाइट से. Yeah. अलग-अलग जाके 99 तरीके. Oh my god. भाई साहब. Okay. दूसरा क्या है? दूसरा दो पार्ट. राउंड हो गए. This is the third round. नहीं, you had a The second part to this. नहीं, no? यही You था, said यही two था. part है. ये सेकंड फर्स्ट पार्ट था कि मतलब फर्स्ट एक तो टू आएगा पार्टर था. कुछ, एक तो सोनी कुछ माइक्रोसॉफ्ट निंटेंडो से टॉप नहीं होगा.
तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट Rockstar से टॉप Games. होगा तो वो टॉप में, सोनी माइक्रोसॉफ्ट निंटेंडो से नहीं होगा, और सेकंड पार्टनर इज माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे अच्छा है वो सोनी वाले से पर अच्छा तुझे होगा। कहाँ से होगा, लाइक मतलब आई विल नॉट एडिट टू योर पॉइंट्स, कहाँ से होगा? टेक अ मूनशॉट, मतलब जो भी है, लाइक आई एम नॉट ये मूनशॉट में जब आएंगे तो बताएंगे, पर Xbox to answer your एमुलेटर लाएगा। to answer your question, like I think I'll have something later on in these rounds which I'll explain. Secrets. Let's go. भाई साहब, this is like a joke. We are beginning in the middle and the end. Let's go to the third part of the prediction thing, and just like you might have seen, वो जो starting में अभी हम लोग के लिए बहुत बढ़िया एक चीज शूट किया है, and we are all saying the right stuff which we said in 2022, right Avi? And we'll see how good of Nostradamus we all are, but in the end we are negative Nostradamus. Like some men aren't looking for anything logical like money, like many of us, right? They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn, and this podcast is filled with them. So I want to know कि ऐसा कुछ नेगेटिव बताओ जो तुमको लगता है कि मतलब सबका खराबी होगा उसमें पर तुमको चाहिए. It will be a negative thing, it will be bad, but you'll really have a fun time when the world is burning. Starfield will be delayed one more time. That is fine. That might be a good thing. Right. I'm not saying it will be delayed to next year. I'm saying it will be delayed one last time. And still be a bad game. I ये think पूरा अगर- करना पड़ेगा सेंटेंस. अगर फिर से देखा जाता है गेम को एक बार फिर से, then I think there is a good possibility that it will be delayed again. मतलब फिल इज लाइक कि नहीं सर हम लोग गेम बना लिए, आप देखना नहीं देखा जाता, अगर मैंने देखा then I will be like my hands are bound. I would rather not know what's going on at Starfield. But yeah, I think वो लोग बोलेंगे कि नहीं यार हमें दो हफ्ता और दे दो प्लीज, हमें एक पर अभी तो हफ्ता कोई और दे दो. डेट नहीं हुआ है. तुमको लगता है कि डेट बोलेंगे और फिर 2 हफ्ता और लेंगे? Oh my god, that is going to be intense. एक और Right. डिले Right. आएगा. It might be 1 week का डिले, बट वो डिले आएगा. Just for टॉड ने बोला था, सपने में आया था कल मेरे. साइबर पंक का जैकेट पहना है, सच तो बोल रहा होगा. I will counter this prediction, but not counter that it's even pile more misery on Microsoft. मुझे लगता है कि जो Kojima Cloud Xbox collaboration है ना, वो this gonna fall through. नहीं होगा कुछ. Yeah. अच्छा, मतलब कैंसिल हो जाएगा वो. टोटल ओवरडोज आएगा. टोटल ओवरडोज नाम है ना सर, ओवरडोज क्या नाम है, जो भी होएगा वो सब पे सारे प्लेटफॉर्म पे आएगा. तो लाइक बिकॉज ऑफ दैट माइक्रोसॉफ्ट वाला जितना भी इस समय एनवायरनमेंट चल रहा है ना कि हम लोग गेम एक्सक्लूसिव नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक दैट डील इज गोइंग टू पास थ्रू. सारा पैसा तो मतलब वहीं जा रहा है एक्टिविजन में. तो मेरा प्रेडिक्शन ये है. I'm with you. अच्छा, माना जब- तो ना एक साथ में टीम बनानी चाहिए था, हम लोग के प्रेडिक्शन काफी मैच कर. जब माइक्रोसॉफ्ट को डिस कर रहे हैं, राइट? तो आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट जिसको लेने मांग रहे हैं उसके बारे में, ठीक है? खूब मिलेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार. जब मिल बैठेंगे 3 यार. माइक्रोसॉफ्ट जिसको एक्वायर करने मांग रहा है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिविजन ब्लिज़र्ड किंग. तो डियाब्लो 4 आने वाला है, राइट? And Diablo 4 will be a big flop and fade away just like Overwatch 2. No. I don't think. पहले तो The end. 3 दिन तो लोग एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे उसको. वो श्योर होगा. Sorry, we are not able to access you. I log. मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हो सकता है लिंक करते रहिए. Like why don't they learn? Because of your patience, we'll give you a in-game cosmetic item which is the dunce cap. जो तुमको पहन के घूमने मिलेगा, which will show you how much of an idiot you are because you pre-ordered this game. But so yeah, that is going to Diablo 4 is going to crash and burn just like Overwatch 2. Cyberpunk 2077. मैं आज लिटरली आज 2 महीने बाद Overwatch 2 खेला हूं, ठीक है? मैं सीजन 2 Overwatch जब आया था तब You सीजन 2 and how many other? जस्ट मी 9 other bots. 5v5 खेले तो. स्टार्टिंग में मैंने सीजन 2 जब आया था तब मैंने खोला, आई बॉट द बैटल पास विद द मनी दैट वाज ऑलरेडी इन द गेम, एंड फिर मैंने गेम नहीं खेला, एंड अभी सीजन 3 चालू हुआ है, आई लॉन्च द गेम एंड आई वाज लाइक यार खेल लेता हूं यार, अब तो थोड़ा अच्छा हो गया, द गेम थोड़ा अच्छा हो गया. दैट्स ऑल. थोड़ा अच्छा हो गया, सो इट्स नॉट डेड. लोग खेल रहे हैं. I don't. ये मतलब मतलब गेमिंग चॉइसेस है ना, ये पोकेमॉन से मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए. कुछ ज्यादा नहीं कुछ अच्छा हो गया है, कुछ हो गया होगा.
This is not. ये toxic sign है. डैरेन These are not good लाइफ signs. का पैटर्न है ये डैरेन, ऐसा नहीं करना चाहिए. वैसे सुशीर, to counter your prediction, I have a feeling कि Diablo 4 will be like very well received. मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि especially 98. because And the good thing about this, Manas, is both of your predictions are negative. हाँ मतलब इसमें like it'll be good in a way कि ना like काफी लोगों को nostalgia भी है, and Diablo 2 का remake like tickled that nostalgia in like the best way, and like they're wanting it to be good, तो maybe जितना अच्छा है उससे भी थोड़ा better perceived होगा, well like I have a feeling. But You think वो Windows वाला strategy काम करेगा, where like one Windows version is good, next is bad, and the next one is good. So maybe. Diablo 1 was okay, 2 was good, 3 was 4 will be great. Okay. Yeah, maybe. हाँ, ऐसा पैटर्न चला तो I have no issue. बैड बॉय बॉबी के साथ खेलेगा मानस. Diablo 4 बहुत मजा आ रहा है दोनों को क्लिक करने में, गोल्ड कॉइंस पे कर उसमें जैसे एंटर करो ना चैट में ऐसे आ रहा है ब्रॉडकास्ट, वो जिल ब्रायन का पिकिंग कॉल, जिल ब्रायन का पिकिंग कॉल ब्रॉडकास्ट में आ रहा है. लास्ट में मानस, Yeah. that was a counter, right? Do you have anything negative? Yeah. I have my own negative prediction, but this might be again positive for a lot of people. कि जो Microsoft Activision वाला deal है, that will not go through at least this year. मुझे लग रहा है there is a decent chance कि it may not go through at all. But इस साल मुझे लग रहा है मुश्किल है, and that like be थोड़ा सा like a negative, like a dark cloud over Microsoft का overall lineup and all, थोड़ा effect करेगा just ना sentiment. तो you're saying कि इस साल भी सुशील को खरीदना पड़ेगा कॉर्ड. हाँ इस साल मैं फिर से Warzone खेलूंगा. Free to play. But yeah, that's mine. Good. Abhi, the last one is yours. I would go with the very quickly made game Dead Island 2 will be very quickly made. Nice one. will be a big flop. Complete flop. Bigger than Saints Row? I think close to Saints Row, maybe. Close to Saints Row. Not going to be probably bigger, but close to Saints Row. I have a feeling Abhi is right, but I don't want him to be right. ये game थोड़ा मतलब looks like it could be fun, but I have a feeling जैसे अभी बोल रहा है वैसे ही होगा. But it looks like वो है ना Dying Light 2 भी है, and then there's Dead Island 2 बाप रे इतना similar type, मतलब it's not same but फिर भी वो तो मर गया game. हाँ, but like still first person थोड़ा. That's what is predicting for Dead Island 2 ना कि वो अभी आगे मर ही जाएगा. Yeah. Be dead. But अभी recently ये Dead Island के पुराने games के remakes remasters आए थे ना, and they very good actually, and they look a lot like Dying Light 1 जितने graphics तो हैं उसके. Dying Light 1 looked great, and like they're pretty fun to play. मतलब उतना depth and seriousness नहीं है जैसे Dying Light 1 and 2 है, but they're fun. Dying Light 2 got moved to an earlier date, right? एक हफ्ता पहले move हो गया वो. हाँ. Dead Island 2 हाँ. हाँ sorry, Dead Island 2. Oh shit, that is not a bad. That is not a good sign. तो Saints Row unless they do a Gotham Knights with it. Gotham Knights, yeah, so, that's not a good sign कि बस और नहीं कर सकते भाई, ले जाओ. हो गया भाई इससे काम हमारा. ये देखो एक हफ्ता पहले ही हमने आगे दिया है. रोगा जी क्या हमसे. That will be great. क्या गेम तो एक हफ्ते के डेवलपर के पैसे बचा लेते हैं हम लोग. Damn it. That was a good round. The next one might sound, not safe for work. It's called the Ball Gazer, but it's not just any ball, but it's a crystal ball. Crystal Ball Gazer. Sometimes when you look enough, deep enough into the abyss, it gazes back into you. There are things which you will be able to clearly see in that void, but no one among us will be able to comprehend that. हम लोग बोलेंगे हैं ऐसा भी होता है क्या? So Crystal Ball Gazer, this is like the big reveal that you will have regarding this prediction. We'll start off with Darren. Darren, do you want to go? Okay. सोनी पुनी वाले लौंडे तैयार हो जाओ, ठीक है? क्या है उस गेम का नाम? लास्ट ऑफ अस फैक्शंस, ठीक है? That will be a $50 game, not 60. Not 70, but 50. Not 100. Not 100. Okay. But 50 क्योंकि it will be a multiplayer only PvP game. तो उसके लिए वो बोलेंगे 70 मत दो, 50 दे दो हमें, और तुम्हें अपने दोस्त के साथ खेलो. लेकिन ये गेम 6 महीने बाद आएगा PlayStation Plus पे.
ठीक है, but when it launches it will be a $50 game that will be PvP only and will tie into Last of Us 3 somehow. Like it will breadcrumb you the story into like to set up Last of Us 3, or it might give you like world building या like वो codex drops वगैरह कुछ ना कुछ, but the game will like somehow tie into Last of Us 3 and it will be $50 on launch and a PvP game on release. चलो सही नॉटी डॉग को पैसा चाहिए. उस प्राइस के अलावा लाइक एवरीथिंग आई लाइक अबाउट कि ना हाँ ऐसा होगा तो मजा आएगा. प्राइस मुझे लग रहा है आई जस्ट डोंट नो विल इट बी पेड, विल इट बी फ्री, व्हाट विल बी बेटर. मैं तो बोलता हूँ कॉर्ड की तरह DMZ मोड कर दो उसको, ठीक है, फ्री टू प्ले DMZ, you know, you get I out don't of think your so. Naughty Dog will go. पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा. वो पैसे कैसे होगा तो फ्री में दे देंगे. नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है तो वो कह रहे हैं कि तुम फ्री में ले लो, हमें नीचे तुम्हारा पैसा. ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. But I think ये होगा because like they've delayed the game, like this कब अनाउंस करा था and अभी तक डिले हो रहा है, and then they showed concept art only. ठीक है, तो उसका मतलब कि कुछ तो बड़ा प्लान करना है ये लोग for this game and पैसा लेंगे लोगों से. इतना मेहनत करके वो ऐसा नहीं होगा कि बोलेंगे नहीं फ्री में ले लो यार तुम लोग. पैसा तो लेंगे तुमसे स्टार्टिंग में. मैं तो चाहता हूँ लाइक जैसे वो स्पाइडरमैन को चेंज किया था ना, चेहरा चेंज करके नया स्पाइडरमैन निकाला, वैसे ही पेड्रो पास्कल डाल दे इस पे गेम में. अरे अब ये नई अपडेट है, जोल की जगह पेड्रो पास्कल. पीपल विल बी पिस्ड. कॉर्ड के साथ एक साथ मतलब एक क्रॉसओवर इवेंट कर दो, मतलब लास्ट ऑफ अस कॉल ऑफ फंगी, you know, it is going to be one of the greatest things ever. But yeah, $50 PvP game sounds good. उसमें जोल को वापस लाके बोलेंगे कि ले बेसबॉल बैट. फोर्टनाइट में है क्या जोल ऑलरेडी? गोल्फ क्लब ले. नहीं है. हां, फोर्टनाइट नहीं. अभी बस टिम स्वीनी अभी के अभी डाल रहा है उसको. जिम रैन को फोन कर रहा है वो. अभी मेरा आई एम नॉट दैट पर्सन. आई थिंक दे मस्ट बी कंफ्यूज्ड कि हम जोल गेम से डाले या पेड्रो पास्कल को डाले. हां, क्योंकि बोथ आर नाउ बिग. आई वांट टू सी हिम डांस दैट वो स्टेप जो क्रेटोस को करते हुए देखा था मैंने. जिम विल बी लाइक ऐसे फोन उठा के फेंक देगा, बोलेगा अरे फोन बजते रहता है, पागल कर देंगे मुझे. बॉबी फोन मत कर. बॉबी कौन है? बॉबी that's a good one, Darren. Let's move on to Abhi. Abhi, what's your prediction, for the crystal ball gazer? As much as that one screenshot that came out for the game Suicide Squad, I still believe that Suicide Squad Kill the Justice League will be far better game than everybody thinks. It is. Points to you, man. मुझे लगता है कि it will be better than everybody thinks, but it will not be successful because everybody thinks it's a bad game. Just like the amount of woes. But that would be surprise सबके लिए कि हाँ सबको लगा खराब, जैसे खेलेंगे what सब, और उसके बाद लोग सब रेकमेंड करेंगे उसके बाद फिर I cannot on principle play a game where the Batman is the bad guy. मैं principle पे नहीं खेल सकता वो गेम. वो Batman is the bad guy? हाँ. Okay. Is he not the bad guy? पर सबसे पहले maybe that's the best. He is the best guy. Best man. हाँ. We'll figure it out after YouTube video. He is a billionaire who thinks the best way to solve Earth's problems is going to go and punch a bum in the face at night, and I was lost that. ये जो argument है ना does not hold any water because Bruce Wayne does a lot of those stuff. If he's going in that direction, he wants to punch a mentally deranged man called the Joker. Don't talk shit. उसका birthday आज. He wants to go punch a disfigured man in the face. All the things he wants to do, and he thinks that's the way to solve. Beyond fixing. जब ऐसा मैं इस पॉडकास्ट में काफी चीजें सुन लेता हूँ, मैं बैटमैन के बारे में बिल्कुल नहीं. Very good. I agree. Damn it, man. I'm also a big fan. Let's not go there. I think I'm also a big fan, but because of those reasons. So yeah, let's move on to the crystal ball gazer by Manas. Manas, what do you think? Oh, okay. This is थोड़ा सा heart wants fee इसमें, but I think एक ना एक दिन तो होना ही है. Like a Metal Gear Solid remake announced for the PS5 from the ground up. Maybe Konami. Maybe it's a Blue Point thing. And ये MGS में I'm hoping any game, MGS 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी कर दो, even 4 का remake कुछ तो दे दो यार. अगर Silent Hill आ रहा है तो maybe ये लोग Peace Walker करेंगे तो देख. I'll take that also. That was pretty good वैसे, बड़ा मजा. Metal Gear Rising Vengeance का होगा remake.
नहीं वो नहीं वो भी चाहिए. चलेगा. I actually don't want that. But the other games, the core games I wanted. Metal Gear 1 का करेंगे ये लोग रीमेक. Not Solid. Metal Gear. MSX वाला. पूरा एकदम हाँ. बाप रे. OG That वाला. will be मतलब interesting, किसी ने ना? खेला मतलब नहीं. जैसे उस तरह की story told like through today's graphic world, I think it could make sense. थोड़ी convoluted तो वो भी है कहानी. नहीं वो टॉप डाउन ही करेंगे. रीमेक क्या है? जस्ट लाइक वो क्या 8 बिट थोड़ा सा एफर्ट. थोड़ा सा वो 8 बिट से 32 पे आ जाएंगे बस. पिक्सल ग्राफिक्स. Okay. Aish, you're left, right? हाँ यार, my क्या है? Crystal Ball games है ना ये? I think it's a little bit of Moonshot ऐसे वैसे भी, but I think जैसे we'll hear something, we'll hear about a new PlayStation exclusive this year from either क्या कहते हैं Sucker Punch या फिर उनका Bend Studios. That's the other one, right? We know games. Insomniac is making a couple of games. Spider-Man and Wolverine. Santa Monica just came off God of War, and क्या कहते हैं फिर कौन बचा? Naughty Dog just they're busy with The Last of Us movie and all that stuff. So I think जो उनके main studios है उसमें से Bend and Sucker Punch are the only two that are Sucker Punch just last was Ghost of Tsushima. So I think it's about time we hear something from them. So I think that's something that should happen inside this year. Blue Point भी उनका है ना? New games. Blue Point भी उनका. Blue Point is about PC ports and remasters. नहीं वो Nexus है. Blue Point is तो ये remake. Dark Souls का किसने बनाया था? Sorry, Demon Souls का. That was Blue Point. Blue Point हाँ. Blue Point. हाँ, so that they have made it a remake studio ना, मतलब ऐसा. At least in my mind it's doing that. I think so. So मतलब I'm not मैं remake के बारे में I'm not that confirmed वैसे इतना. बड़ा वो कर रहे हैं आज आयुष और मानस. बहुत ही वाइब कर रहे हैं आज. जीतना है भाई. One way or the other. मिलके जीतेंगे. So that's my football. I think we should know at least two. Ideally, it will be like good point will be two because वो अभी तक हमारे पास एक slate थी ना, like जैसे God of War, Horizon Zero, Horizon Forbidden West, and then like ये क्या नाम है इसका Spider-Man 2. उसके बाद की future slate is not ready, so I think that is what we'll see more games coming from other studios. Okay. तो मेरा वाला बाकी है, मैं बोल देता हूँ. And this is something that you guys can contest. If you think that this is very plain Jane, then I'll of course change it. Microsoft has tasted blood. ये मैं I want something कहीं एक tick box हो जितनी बार Microsoft बोला है पिछले Microsoft super cut. Microsoft Predictions 2023 prediction Microsoft this year. Yeah. So Microsoft has tasted blood. Okay. And their own blood by getting punched in the face so much. Yeah. They will do one more big shadow drop this year. Big shadow drop. It's going to be successful. It's not going to come out from like the big wigs. मतलब ऐसा नहीं कि Bethesda से मतलब Starfield जैसा कुछ ड्रॉप होगा वैसा और something like that. But Starfield shadow drop आ गया. Starfield shadow drop. And you can play it right now. You can play it right now. This will be like वो एक हफ्ता पहले खिलो वाला केस. So that is the worst thing that can happen. But it will come from a smaller studio. But it's going to be as well received by the public like Hi-Fi Rush. It can be from anyone like NX Style से हो सकता है. Compulsion से हो सकता है. फिर या स्टेट ऑफ डीके वाले जो लोग हैं अनडेड लैब्स उन लोग से हो सकता है. किसी से भी हो सकता है. It can be from anyone. It can be from even like a mobile game which might do as big as Fallout Shelter did at that point of time. But I'm not thinking about a mobile game at first, but I'm saying first party game hoga. It will come out, shadow drop, and it will be as big as Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush 343 नहीं होगा. हाँ वैसे like a follow-up question Sujit. If Microsoft like जैसे last year लोगों ने showcase किया था कि ये game अगले साल तक आ रहा है. Do you think they will do another one like this year as well? कि अगले साल तक जून तक इस तरह का एक showcase और? Yeah. Like yes, absolutely. Absolutely, yes. I think every year yes. now they'll do it. Yeah. So I think
I think कि Microsoft will कुछ है ही नहीं उनके पास दिखाने का यार. इन एक्साइल ने तो पेंटिमेंट निकालना भी राइट या इन एक्साइल नहीं अभी वो भी है ना ऑब्सिडियन वाला गेम है. आई वांट टू सी हाउ दैट ऑब्सिडियन का वो है ना? वो सेकंड Avowed. पार्ट राइट. नहीं आउटर Avowed. वर्ल्ड्स Outer Worlds 2 है. Oh, But I'm saying that it'll be it will be a smaller game. studio. डेवलपर जो है दे आर नॉट बॉट आउट बाय माइक्रोसॉफ्ट येट राइट. कौन सा? फिर वो पिलर्स ऑफ इटर्निटी जो बनाते हैं लोग. हाँ Microsoft ऑब्सिडियन है. है ना वो. नहीं Microsoft in है. exile. वो Pillars of Eternity in Exile, right? Yeah. Is it? Yeah. Pillars of Eternity is in exile Microsoft. मैं ये पूछ रहा हूँ. That's my question. Pillars हाँ of in exile Eternity भी is Microsoft का है. In exile might be Wasteland actually. Obsidian है ना Pillars of yeah, Obsidian is Pillars of Eternity. Avowed Pillars of Eternity Oh, का sorry. ये है sequel. Pillars of Eternity कह रहा था मैं. दूसरा एक और एक RPG ना बहुत ही अच्छा सा जो कि very similar to Pillars of Eternity. Wasteland. Very popular also. नहीं, Wasteland. दूसरा है. कोई let's maybe I'm not Okay, okay. confusing stuff. Let's move on. कोई दिक्कत नहीं. Let's not Divinity की spend बात time. कर रहे हैं. Are you thinking of Divinity or something? Divinity, yes, original sin नहीं नहीं Divinity. Yes, वो that's the one. independent है. That's completely independent, right? Yeah, हाँ, ठीक है. So So something should come out from there also ना. काफी टाइम हो गया Divinity का कुछ नया उन्हीं नहीं का है. तो है Baldur's Gate. Baldur's Gate लटका 3 के रखा early है access वो. से निकलेगा ये साल. Piece of shit. And that was, I remember that was first shown at an Xbox showcase only, if Right. I'm not wrong. Yeah. I think है so. ना? Yeah. So that is why I was making that Hmm. Xbox connection with Okay. the post wala. I see it. Sushi, But this so will you be a said- first party game. Oh, Okay. Okay. First party. Hi-Fi Rush के तरह ही होगा, and it will be shadow dropped and it will be amaze balls. so it will be a shadow dropped game. Then it will, according to you, this game is also going to perform better than whatever PlayStation puts out. No, I didn't say that this is going to be that. यही होगा. Big. You're saying होगा. Xbox will और release क्या 2 होगा? good games this year. Maybe 3. I don't know. मुश्किल है. 3 बाप रे. अच्छा हाँ. सुशी तो उस वाले केस में अगर Starfield beats the score of Spider-Man, let's say, मतलब मान के चल रहे best game from Sony is Spider-Man 2, Right. है Okay. ना? तो मतलब मान लिया है predictions इस still साल. hold true. मतलब मैं पूछ रहा हूँ, Starf- video prediction hold true. Yeah, it will hold true, right? Starfield is beating. Okay. We'll discuss Spider-Man. this when it if it देखते happens. हैं. देखते हैं. ठीक है. And the last part, we are coming to the last part of the predictions episode, and this is called it's called the Moonshot. And ऐसे दूसरे लोग को लग रहा होगा Moonshot दूसरे वाले कुछ भी हम लोग क्या बात हो रहा है यहाँ पे. The thing is that the probability of this happening in this timeline, ये जो हम लोग का ये Marvel DC वाला timeline है, the probability of this thing happening, whatever we'll say, is negative. So disbelievers are going to look at you and laugh. But will when go this last. does come true, you are going to become a celebrity. मतलब कोजिमा गॉड जैसा लेवल का तुम्हारा रीच रहेगा. You will be like, people will know all over the world. तुम्हारे clips दिखाए जाएंगे. The next Nostradamus, ठीक है? And you'll be a big thing. So this is the time to take your shot, And as we all know, famous. you miss all the shots that you don't take. So go ahead. Who wants to go first? This is an open for all question. Okay. I'll go first because I think I'll forget it if it comes around. Matlab, I had it in my mind when you were doing the last round and I completely forgot about it when you started again and it just came back to me, so I want to blurt it out as soon as possible. I think the Bungie Sony collaboration will put out something today. This I think that's whatever it is, because they just finished their first light or last light kya hai na, whatever the DLC is. So I think the next plan of action should be collaboration with Sony, and we should see something out this year, like whatever like at least the title of the game, whatever they're putting out, something, let's say कोई छोटा सा 2 second का teaser animation. But I think it's still in the realms of Moonshot, because last year he announced kiya hai, and Bungie is working on an all present game which is season based, 3 months. So it is not that easy to put out another game. So that's my Moonshot. It will be a game called Halo. ठीक है? And it will be about Chief Mister. Chief Mister. It will be a shooter. Chef Mister. Yeah. Okay, who wants to go next? I'll go next. मेरा इतना बड़ा नहीं है. I should have switched this with Star Citizen. But anyways, I think Last of Us 3 will get announced
this year as the next Naughty Dog game. Ooh. That's But the nice. factions के बाद अगर ये announcement होती है तो that will also align with my prediction that I made कि like another PlayStation exclusive is announced. Yeah. सही है. Manas and me are vibing today, man. We're like Moon Girl and Dinosaur. But yeah, I'm hoping कि because अभी ऐसा लग रहा है with the show being such a big hit, like it makes sense for them to push forward with more Last of Us ताकि season 3, 4 जितना भी आना है show का भी ना सब ready हो material. So maybe they'll announce it. Let's see. Factions में डालेंगे. Yeah, सही कह रहा है तू. वो भी हो सकता है. वो भी हो सकता है. But so Manas, if the new Last of Us comes out, do you think like still be focusing on Ellie or will it be like a new cast in the world of like जैसे peripheral? Last of Us 3 cast part 3 में. Part 3 I part think has 3. to wrap up like proper conclusion to Ellie. वो और जो भी कितना wrap up होगा मतलब उसका नेक्स्ट क्या हुआ लाइक डज शी आई वुड एक्चुअली लाइक टू सी वो वाला थ्रेड क्लोज ना कि वो क्योर के साथ ना लाइक इज देयर नो क्योर लाइक समबडी डेफिनेटली सेइंग इट दो आइडियली आई वुड लाइक टू सी लाइक अ रश टुवर्ड्स लाइक वो क्योर का टुवर्ड्स ना कुछ लाइक कूल इंटरेस्टिंग होते हुए would be fun कि अगर जोल जो the lie said कि हाँ there are lots of people who are immune वो सच में हो there were lots of people who were immune there is like a community somewhere Sahara desert के अंदर बनी हुई है नहीं Sahara desert चला हुआ है अटकामा के अंदर वहाँ सब क्योर्ड लोग ही चल रहे हैं वहाँ पे Alright, this will be how factions ties into Last of Us 3. Your character from factions is the one who has to hunt down Ellie for the cure. You play one of those fireflies. फन हो अब सकता उनको पता चल गया कि ये जिंदा है लड़की ये मेरे को पता चल रहा है कि साइबर पंक का स्टोरी इतना खराब क्यों था एक ही तो अच्छी चीज थी गेम में okay so that's Ayush and the Manas only is thing done good in that game was the reload animation of Keanu Reeves gun and the T-pose after Ayush Manas is over Abhi do you want to go next yes With your Moonshot? so my Moonshot is the game that I was super excited when it got announced that is Alan Wake 2 I want that game this year to be released ये तो Moonshot नहीं है I think आ जाएगा इस साल पर ठीक है Moonshot इससे लग रहा है क्योंकि वो लोग खाली ये बोले there was like a news की Alan Wake 2 for now is playable from start to end बस इतना बोले but you never know कि हाँ कि उस सब कुछ हो गया है कि नहीं हुआ है maybe हो सकता है कि वो तो कब से Skull and Bones के बारे में बोल रहा है इसका क्या मतलब Skull and Bones has a start but no end no end सही बात but that's a good one Alan Wake 2 इस साल release हो गया I want to see कि क्या करें because this would be the most this would be a lot more horror than survival how horror was, like pure survival horror game so that side is what I want to see because Alan Wake I felt was horror-ish बहुत सारे elements था horror के which I really liked तो इसमें अगर वो लोग इसको और enhance कर रहे हैं making it much more like a horror game how it's supposed to be I want to see how Remedy does it कि I believe in Remedy and Control और ये सब बना के सब looking forward hopefully यार इससे याद आया I should have picked one of these के अंदर what the heart wants Max Payne 4 ये रीमेक के पहले नहीं रीमेक तो आएगा लेकिन they'll announce Max Payne 4 with like the original right like voice actor and नहीं वो Rockstar वाला है Rockstar अरे डायरेक्ट अनाउंसमेंट तो बहुत लोग कर दे रहे हैं 4-5 6 गेम करके गेम खत्म तो करे पहले ना ये विक्टर का 3 गेम आएगा ये अनाउंस ही कर दे मैक्स पेन गेम आएगा ये वो अरे एक एक करके करो भाई नहीं सब कर दो यार you Sushir you go I'll go last okay you want to go last okay so this might start off as you might think like अरे ये तो Moonshot ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है पर let me go on and complete it and then you might think okay that is like weird and that might not happen so Sony और Microsoft की लड़ाई हो रही है अभी and वो तो रही है and अभी न्यूज़ आया है कि Sony people have gone on a flight and they've gone to talk to Microsoft closed door meeting हो रहा है कुछ negotiations चल रहे हैं कहता मेरे घर के बाहर मिल मेरे घर के बाहर मिल and then they are like talking कि ठीक है ये एरिया मेरा एक तेरा एक मेरा दो मेरा दो तेरा you know that kind of you know Akshay Kumar thing is happening over there so what I think is that the Microsoft Activision Blizzard King deal will go through it will go through and it will happen this year अरे भाई indirect competition with Manas
CMA, FTC सब बैकआउट कर जाएंगे. सोनी बोलेगा बैकआउट कर देने. बैकडोर. मैं ये कह रहा हूँ, सुशील, I dare. If this happens, will you post on a Twitter कि CMC is now a part of Xbox Studio? Will you post that image? Listen, and that is not even the moonshot. There is more. मैं तो पोस्ट करूंगा कि मैं गलत था. ठीक है. ये people on Twitter know that I'm wrong all the time, so it's not a big deal for them. FTC, CMA सब back out कर जाएंगे. The deal will go through, and but that's not the moonshot. Sony or Microsoft will not be acquiring any more companies this year. No companies, they'll not acquire any more companies. But does that mean Ubisoft जो मेहनत कर रही है तब से कि हम लोग ये 25 आ रहा हूं. But does that mean that companies which are looking to be acquired, Ubisoft, Square Enix, Asobo, CDPR, all these companies, Sega, all these companies which are looking for acquisition, even Remedy, कि अरे भाई आओ कोई हमें एक्वायर कर लो, हमारा हमको बहुत दिक्कत है, बहुत सारे गेम है पाइपलाइन में पर कुछ करने का नहीं. So those, at least one or two of them will get acquired. Like a big shot will get acquired this year. It will not be from Sony. It will not be from Microsoft. It will not be from Sony. It will not be from Microsoft. It will either be a NetEase or a Tencent or even like a. अरे वो क्या नाम है, सऊदी तो निंटेंडो खरीदेगा, आस्ते आस्ते ले रहा है अभी. no one is किसी को प्रॉब्लम नहीं है अभी मारियो खेलने में. ऐसे चुटकी बजाएंगे, मारियो हेड उतारेगा, उसके नीचे वो इटालियन से सीधे शीक मारियो शीक. And this will be either Tencent, NetEase और वो क्या नाम है वो जो सबको ले लेता है, Embracer Group. Yeah. One of these big shots will get acquired by the NetEase, Tencent, Embracer. It will not be Sony और Microsoft. इस साल acquisition के लेके कोई बात नहीं करेंगे. There will be no more talks. So that's my moonshot this year. ठीक है भाई. सब Nintendo सब लेगा. इसमें इतना वो है ना, स्टार इतना है ना इसमें, जैसे वो लिखे ना टर्म्स एंड कंडीशंस apply. तो ये भी हो सकता है और इसके साथ ये भी हो सकता है और साथ ये भी हो सकता है. मैंने ऐसे बोला था कि वहां से ऐसा होगा, तो तुम समझ रहे हो मैं सही बोल रहा था. इस पूरे टाइम मैं ही सही था गाइस. ये मेरे को पता था कि AAA गेम्स का प्राइस कैनिबलाइज होने वाला है, पर गेम पास अच्छा है. Yeah, that works, yeah, last one is on you, Darren. Okay guys, don't laugh. लेकिन इस साल का सबसे बड़ा गेम, like Sushir said, won't be a Microsoft or a Sony. It will be a Rockstar game because it will be GTA 6. Moonshot तो है ये. This is my moonshot. ये तो प्लूटो शॉट है. Will come out. ये तो बहुत दूर है. गेम क्या ट्रेलर नहीं आएगा इस साल, ट्रेलर तक नहीं आएगा इस साल, बैठे रह जाओगे. एक और लीक होगा. I feel that is more, GTA 6 coming out is more probable than Xbox releasing 3 good games this year. और जिनमें से एक स्पाइडरमैन 2 की क्रिटिक रेटिंग बीट करेगा. क्या? One of which is supposed to beat Spider-Man 2. यार ये तो Rockstar Games GTA 6 निकालेगा. देखो नवंबर में वो बोलेगा भाई बहुत साल हो गए हमने जब सितंबर में उन्होंने रिलीज कर दिया GTA 5, तो बोलेंगे भाई देखो 10 years this year. 11 साल हो गए इस साल. तो ये रहा GTA 6 का ट्रेलर. ये गेम that will be shadow dropped by Microsoft. It's available now. Go buy it. On Game Pass. Go buy on Game Pass. नहीं Rockstar थोड़ी करेगा ऐसा. सोनी वालों की फट जाएगी, बिल्डिंग में से बाहर निकलेगी. तुम देखना Rockstar निकालेगा इस साल. तभी तो GameSpot है जो भी था वो इसने निकाले कि some people are saying GTA 6 will come out. उन्होंने हमारा तू ही बोल रहा है, अकेला तू ही बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा. GameSpot तेरी बात सुन के आर्टिकल लिखा था. वही तो I will wish this into existence. I will make it happen. पूरी कायनात को मैं लगा दूंगा इस पे कि भाई Rockstar वालों को GTA 6 निकालना इस साल. मैं रोज उनको ईमेल भेजता हूँ एक नए अकाउंट से कि प्लीज GTA 6 इस साल नवंबर में रिलीज कर दो, मेरे को जीतना है. अरे तो क्या होगा ना, वैसे any other year I would like this to happen, but इस साल मैंने इसके against bet लगाया तो there is a bigger chance of GTA 5 being released on mobile than this happening. We are going to announce something new about GTA. Darren is like a hyper. GTA. Don't you have a mobile? इसे बोलेंगे आके स्टेज में.
How bad it will be if GTA 6 is a mobile only game. Oh my god. ऊपर वाली GTA 6 आएगा. GTA 1 Stadia style exclusive में बोल दे GTA वो 6. अभी. वो भी चलेगा. This Steam was Deck exclusive. हो. amazing, man. Like seriously, the predictions all of you came up with, like, I really enjoyed all of them, and I hope you guys also enjoyed it, right? Back to you, Ayush. What do you think about the whole episode? Sorry, man. It was a little late. We are here in February right now, but the predictions are like कोई भी साल काम करता हुआ है. ही नहीं कि हम लोग प्रेडिक्ट कुछ करें अच्छा सा. Yeah. क्या है ठीक है. डेड स्पेस आया, सबने पसंद किया, वापस and then moved on to मतलब ठीक है. But yeah, I think this was a great show. If you agree with any of our predictions, please let us know in the comments. If you have your own predictions, which you think, don't go for the obvious ones. Go for the Moonshot, because something that you can surprise us also. Put your best Moonshot prediction in the comments below. और edited दिखता है, तो बाद में edit मत करना. हमारे पास सब है. Sushil keeps the and let us know who you think has the best predictions this time and the most correct predictions. And if you like this video, give us a like, share, and subscribe. If you want to get in touch with us, the best way to do that is to join our Discord channel now. That's the best way. Or put a comment down in the video below, and we'll pick it up in our next comment videos. But until then, this is Ayush, and with the team signing off. We'll see you next week. Bye bye. Bye.